So, well, students, I am myself, teacher Muhammad Amin Anger, Middle School, Batpora, Do, Class 8th, Chapter Mensuration, and exercise number 10.2. As earlier, yesterday, we have learned about trapezium, what is trapezium and what is its area. So here is a question number 1. The shape of the top surface of a table is trapezium. ये क्वेश्चन दिया हुआ है. This is given. The question is given here is the shape of top surface of a table is trapezium. Find its area if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter and a perpendicular distance between them is 0.8 meter. So student, first we have to understand what is question. If we will understand the question, we can reach to the answer. I think you have listened the question carefully. Question is here written on the board and we will try to solve the question. But before the solution of the question, we must know what is given in the question and what we have to find. And side by side, we must draw a figure on the board so that we can understand it very well. So figure is here. This is a table, top of the table, and these are the piles of the table. So the dimension given here is side AB is 1.2 meter, side BC is 1 meter, and a perpendicular distance between these two parallel lines is 0.8 meter. Understand? Good. We know that, हम जानते हैं क्यों? Because we have learned it, we have understand it yesterday. Trapezium and its area. So area of top surface of a table is equal to area of trapezium. The area of this table is equal to area of trapezium because the table is trapezium shape. So the formula, we will write here the formula of finding the area of trapezium as 1 by 2. 1 by 2 means half of sum of parallel sides. Where are the parallel sides? Parallel sides are here, AB and BC. These are parallel sides and their sum multiplied by height. What is height? Height is this perpendicular distance. So now we will put the values, we will put the dimensions here in the question and we will reach to the answer.
half of 1 by 2 multiplied by DC side is equal to 1 meter plus AB side is equal to 1.2 meter multiplied by 0.8 square meter. Square meter, because we are here finding the area of the trapezium. This is equal to, next step, half of 1 plus 1.2. Here is a rough 1 plus 1.2. 1.0 plus 1.2 is equal to 2.2. 2 plus 0, 2. 1 plus 1 is equal to 2. So this is equal to half of 2.2 multiplied by 0.8. 0.8 is the vertical perpendicular distance. 2.2 multiplied by half means 2.2 divided by 2 is equal to 1.1 multiplied by 0.8 square meter. 1.1 we can write it as 11.11 upon 10 multiplied by 8 upon 10 square meters is equal to 11 8s are 88 divided by 10 10s are 100 square meter. So this is equal to 0.88 square meter. आंसर। बच्चों, आज हमने फिर से कोशिश की कि मेंसुरेशन की अगली एक्सरसाइज हम कर पाएँ और आप तक पहुंचाने की कोशिश की। जैसा कि हमारी हायर अथॉरिटीज़ ने सभी टीचर्स को इन्फॉर्म किया है कि आप बच्चों को घर से ही थ्रू सोशल मीडिया पढ़ाते रहें। तो मैंने आज मेंसुरेशन एक्सरसाइज नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके सामने टेबल पे लिखा, फिर उसमें जो है वो उसका सॉल्यूशन जो है करने की कोशिश की और उसकी पहले मैंने फिगर बनाई, फिर आपको फिगर समझाई, उसके बाद उसमें गिवन क्या है, दिया हुआ क्या है और हमने करना क्या है, हम जानते क्या हैं। तो हमने फार्मूला लिखा, फिर उस फार्मूले में हमने जो है इसकी ये जो वैल्यूज़ पुट की और हम नतीजे पे पहुँचे। इसका जो है हमने आंसर निकाला कि ये जो टेबल टॉप है इसका एरिया कितना निकला, 0.88 स्क्वायर मीटर्स। तो बच्चों आज इतना ही। तो इन्हीं अल्फाज से हम रुखसत होते हैं और कोशिश करते हैं कि आप बच्चे जो है घर में बैठे बैठे हमारे ZDO मैम ने, हमारे CO सर ने और बाकी जो हायर अथॉरिटीज़ है उन्होंने सभी टीचर्स को इंस्ट्रक्शन दी है और इन्फॉर्म किया है थ्रू सोशल मीडिया कि आप बच्चों को इस कोरोना वायरस के बीच में, ये जो एक बहुत बड़ा पैंडेमिक है, इसके बीच आप बच्चों को पढ़ाते रहें। तो हमने भी कोशिश की अपने हिसाब से कि हम भी घर से ही एक टॉपिक तैयार करके और बच्चों को ये जी सोशल मीडिया के थ्रू ग्रुप्स में डाल के, ताकि वो बच्चे भी आगे अपनी ये जो तालीम जो है वो कैरी ऑन कर सकें। थैंक्स।